Dear students, let us go to the next chapter. Some applications of trigonometry, mainly height and distance. In the previous video, I have described you very perfectly what is trigonometry and where we are using that one. Okay, and today in this class we are going to study the particular applications in what all areas we can use the trigonometry. So there are two typical things which we have to understand in this chapter, especially the angle of elevation and the angle of depression. These two things are so important because in every questions there will be mentioned the angle of elevation, angle of depression. So unless and until you understand what is the meaning of this one, you cannot figure it out. If you cannot draw the figure, then definitely you cannot solve it. So in this chapter, the main important thing is how to draw a figure. Here you can see one question is given. I will go to the question, but here regarding the question, I have made here a figure. So if this figure goes wrong, then you cannot solve it. So actually the main thing regarding this one is that you have to prepare a perfect diagram in regard of the question which is given to you. So here these 2 points are so important. I coming to the point. Angle of elevation, that means just imagine a person who is standing there. Here I have drawn an imaginary, a person is standing there. So the straight line from his eyes, that line is what we call the horizontal line. This is the horizontal line. So every time from the eyesight of a person, the line which goes straight and which is parallel to the ground is what we call the horizontal line. And just imagine that this is a hill or it's a mountain or it's a cliff. Okay, so if he want to see something which is on the top of the cliff, if he want to see something which is lying on the top of the hill, he has to raise his eyes towards this area, right? Means this is the straight eyesight. From here he has to lift his eyes up to this much angle. So you can see here there is an angle which is made towards the top edge, and this angle is what we call the angle of elevation. Means in simple words we can say, if a person want to see something by raising his head upwards, the angle made between the horizontal line and that eyesight is what line of sight is what we call the angle of elevation. Angle of depression means just imagine that the person is standing on the top of a tower. Here there is a tower, he is standing on the top of a tower. So if he want to see something straight, this will be his eye line, right? Straight line which is parallel to the ground. So that line is what we call the horizontal line, just like this line. So this is the horizontal line, and if he want to see something which is below, what he has to do, he has to bring down his eyes towards the lower part. He has to bend down his head towards the downwards area, right? So at that time the angle made towards the downwards area, means beneath the horizontal line, that angle is what we call the angle of depression. So if a person is standing on a tower, here you can see this figure. A person is standing on a tower, and from the top of a tower, if he is viewing the top of another tower, there this line is what we call the horizontal line. You know that is a horizontal line which goes parallel to the ground level. From here, if he want to see that anything which is lying on the top of this tower, he has to raise his eyes upwards. So here the angle made is what we call the angle of elevation. And at the same time, if this fellow he want to see something on the ground, he want to see something on the bottom of the tower, he has to bring his head downwards. So there also an angle is made between the horizontal line and this angle. So that angle is called the angle of depression. So whenever you are seeing in a question, if you see that the word depression, make sure that he is viewing downwards. If you are hearing a word, if a word is given inside the question as elevation, make sure that something is on the top and the observer he is standing on the ground. He is standing on the low floor area and something is on the top of him. He is viewing something on the higher area. So even though if I draw here a person, in some questions if the height of a person is given, then only we will draw like this and we will take it. And if the height is not given, यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर उसका हाइट कुछ भी नहीं दिया है, तो हम ऐसा लेगा, हम इसका ऊपर एक आदमी को ऐसा बना के नहीं, उस तरह का पिक्चर नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसा सोचेगा कि एक आदमी टावर का ऊपर है, उधर से दूसरा टावर का ऊपर का कुछ चीज इतना वाला एंगल मीन्स
जस्ट इमेजिन दैट 30 डिग्री एलिवेशन बना के देख रहे करके दिया है, तो इधर ये लेगा हम 30 डिग्री करके, तो उस वक्त हमारा फिगर जो है इस तरह होगा. सो इवन दो वी आर रिप्रेजेंटिंग द फिगर लाइक दिस, टावर ए टावर बी, ऐसे इस तरह से मैंने बनाया, फिर भी when we are coming to the question we will not draw like this, we will simply draw a ground line, simply a line like this, it will be a ground level. If something is on the tower we will say this is a tower. Okay, if somebody is standing and viewing the top of a tower at an angle of elevation 30 degree, then we will say the person is standing at A, and let BC be the tower, BC be the tower. Simply we will draw a 90-degree line and we will say that is a tower, and from here we will say this is the angle which he is seeing in 30-degree angle. He is seeing something on the top of a tower. So we will say at place A he is standing. इधर तो वो आदमी, मैंने वो आदमी का वो नहीं बनाया, उधर से मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो आदमी का हाइट नहीं दिया है, तो जमीन से लेगा सभी. We will neglect the height and from the ground level we will take the height. Every time make sure that whenever you are doing something regarding trigonometry, you must have the 90-degree angle, because trigonometry is the relation which deals with a right angle triangle. Okay, so we have to make a right angle triangle. So this will be the figure, this will be the sketch whenever we are drawing. Even though this is the truth, सच्चाई तो यही है, लेकिन उसके हिसाब से जब हम एक फिगर बनाएगा, फिगर तो इस तरह आएगा, इसका रफ स्केच आएगा. ठीक है, we will never draw a tower like this. We will simply mark in straight lines. By using straight lines only we will figure it out. Okay, so coming to the first question, here it is. Just go to the first question. I will read it for you. Okay, hope you can see it. Let me clear it. Okay, here it is. From the top of a 7-meter high building. So first of all you have to draw the ground. Then you will draw a 7-meter high building. You have taken here as AB. सबसे पहले इस तरह की लाइन बनाइए AB. From the top of a 7-meter high building. Top of a 7-meter high building. So इसका ऊपर से the angle of elevation, not the point, angle of elevation. So he is seeing something on the top. Of the top of a tower is 60 degree, means a person is standing on a building and he is viewing something on the top of a tower. So you have to draw a tower also. Tower का ऊपर का चीज वो एंगल ऑफ एलिवेशन में देख रहा है करके दिया है, तो उसका मतलब ये है ये आदमी जिधर खड़ा है वो बिल्डिंग से भी थोड़ा बड़ा वाला बिल्डिंग है, बड़ा वाला टावर है ये. अगर इधर एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो पक्का ये आदमी जिधर खड़ा है उससे नीचे होगा दूसरा बिल्डिंग. ठीक है, उस तरह आपको पता चलेगा कि दूसरा जो फिगर जो है इससे बड़ा वाला बनाना है या इसका छोटा बनाना है करके. सो हियर इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, सो आई मेड इट ए बिग फिगर, सो आई मेड इट DC. DC is the building, there DC is the tower. Okay, DC is the tower, and from this point he is seeing the top of the tower at 60-degree angle. So you are drawing the eye line, that means the horizontal line, and from there towards the top it is 60-degree. And the angle of depression, okay, that is also given. The angle of depression of the foot is 45 degree. इसी टावर का फुट की ओर वो देख रहा है 45 डिग्री में. सो दिस इज द एंगल 45 डिग्री. क्लियर, ऊपर की ओर 60 डिग्री से, दूसरा नीचे डिप्रेशन वाला एंगल किधर से होगा, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन. ओके, सो इट इज 45 डिग्री. Find the height of tower. You want to find the height of this tower. So we made the figure, then we joined this one, we made this one. So this much you got it. So इधर से नीचे की ओर देख रहा है, ये तो बिल्डिंग हाइट है, वो दिया है 7 मीटर. पक्का ये 7 मीटर है तो इतना ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर आल्सो 7 मीटर. ओके, इतना तो 7 मीटर दिया, हमको क्या चाहिए, पूरा DC चाहिए. तो इतना 7 दिया तो बाकी इतना भी ढूंढना है ना, इतना ढूंढना है. जस्ट नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी परफेक्टली. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस मच, क्योंकि पूरा DC चाहिए हमको, तो इसको हम H करके मान लें. नाउ यू हैव टू डिफाइन योर फिगर हियर. Let AB be the building. AB is 7 meter. Then CD is the tower. From the question, you can see this angle is 60 degree and this angle is 45 degree. BC be X. You are taking this BC as X. If BC is X, AB X होगा ना. BC will be equal to AE. BC X है तो AB X होगा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा. It's a rectangle. Okay. So DE we are taking as H. This much you have mentioned. Now understand. See, this is the way how we are getting into the question. Now listen very perfectly. This is the height. This is the height. You have to find the height of this one, DC. पूरा DC चाहिए, लेकिन इतना तो H लिया है. H plus 7 जितना आता है उतना होगा पूरा DC. ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो हमको पहले से पता है, तो बाकी कितना चाहिए हमको, बस इतना ही चाहिए, है ना. सो ये कौन सा ट्राइंगल का अंदर है,
it is in this triangle. So in that triangle 60 degree angle is given. अगर इसका अंदर एक और साइड का मेजरमेंट दिया गया है, तो अगर AD का मेजरमेंट दिया है, नहीं तो AE का दिया है, तो पक्का ये निकाल सकता था. We could find it because we know if we are giving one measurement, any one side if it is given and one angle is given, from that one by using sine, cos and tan you can find another opposite side or you can find the hypotenuse. But here nothing is given, only the angle is given. So इसका अंदर अगर हम पहले ये ट्राइंगल लेगा तो इसका अंदर से कुछ भी नहीं कर सकता है, कम से कम एक साइड तो चाहिए. तो बोलिए इसका अलावा बाकी ये दोनों साइड्स है हमारा पास, तो इन दोनों में कौन सा साइड हमको मिलेगा? ये मिलने का एक संभावना है क्योंकि यही एक्स है, ये भी एक्स है ना. सो लेट अस कम टू दिस ट्राइंगल. Here there are plenty of triangles. Which triangle you have to choose? I told it already. You have to choose every time. You have to choose only the right angle triangle. That's why we will not choose this triangle. है ना. ये ट्राइंगल तो नहीं लेगा. ओके, ये ट्राइंगल भी ले सकता है लेकिन इधर से 90 डिग्री आएगा. ओके, यू कैन टेक दैट वन ऑल्सो, बट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ए 90 डिग्री. इधर देखिए, ये भी एक ट्राइंगल है ना, ACD. नहीं ले सकता है बिकॉज इट्स नॉट अ 90 डिग्री ट्राइंगल, राइट. वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो वो नहीं ले सकता. जो नाउ वी वांट टू फाइंड दिस x, तो ये भी इधर भी एक x दिया है. सो लेट अस फाइंड दिस x. ये x कितना आएगा उतना ही आएगा ना, ये भी, राइट. सो दिस इज आवर x. सो ये वाला x कौन सा ट्राइंगल का अंदर पड़ा है? ये रहा ट्राइंगल ABC. इट्स अ 90 डिग्री ट्राइंगल ऑल्सो. नाउ हियर इट इज 7 मीटर. इधर का एंगल मेजरमेंट सच में नहीं दिया था, ये दिया था 45, इसलिए इधर भी 45 आएगा क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दीज टू आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. सो इधर जितना भी आएगा उतना ही होगा ये भी, इसलिए इधर 45 लिखा है. ठीक है, सीधा इधर 45 नहीं दिया है, जो दिया है वो ये दिया है, ये दिया है ना, ये 45 दिया है, इसलिए हमने BCA करके 45 करके निकाल दिया. ओके, वी हैव रिटन लाइक दिस. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड. So let us choose this triangle, and from this triangle let us find x. That is our first duty. So let us take that triangle. So coming in triangle, what is the name of the triangle? ABC, comma, यही है हमारा एंगल. सो ये इसका ऑपोजिट साइड है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस है, यानी कि एडजेसेंट साइड है. ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड? इट इज tan थीटा. सो इन ट्राइंगल वी कैन से tan थीटा, इधर का थीटा कितना है? 45 है. सो स्ट्रेट tan 45 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस. So we can say it is AB divided by BC. That's equal to what is AB? Okay, नीचे लिख रहे हैं. tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 है. 1 is equal to what is AB? It is 7 divided by BC is x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो this implies x is equal to 7 मीटर. x तो 7 मिल गया हमको. x 7 मिल गया तो ये भी 7 होगा ना. Now you got that is also 7. That implies, इसका मतलब BC is equal to 7 meter. Therefore, BC 7 meter है तो AE will be also equal to 7 meter. You got this one 7 meter. Now from this triangle you can find this one, है ना. वही चाहिए था ना हमको, H का वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ किया है. Now you can find that one. Now BC is equal to 7 meter, AE is equal to 7 meter. You got it. So from here what you will write? Let us take this triangle, choosing next triangle. In triangle, what is the name of this triangle? AED, कॉमा, उधर भी कौन सा चाहिए? tan लेना है या साइन लेना है, कॉस लेना है, देख लेता हूँ. इसका एडजेसेंट साइड है, इसका ऑपोजिट साइड है. ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में रिश्ता कौन सा है? tan ही है. सो वी विल राइट अगेन tan, लेकिन इधर का थीटा 60 है, इसलिए 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड इज DE by adjacent side is AE. tan 60 का वैल्यू it is √3. √3 is equal to DE. Where is DE? DE तो H है, divided by AE कितना है? AE तो ये रहा, AE तो 7 है. So 7. So here from here we can say what we can come to the conclusion, to the final point. H is equal to 7√3, right? That much meter, because इधर तो बाकी सभी मीटर में दिया तो पक्का ये भी मीटर में होगा. हमको H नहीं चाहिए बल्कि हमको DC चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो टावर तो DC है,
तो हमको पूरा डीसी निकालने के लिए h का पीछे गया, h तो अभी मिल गया, तो पूरा डीसी का बताइए। देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू h प्लस 7 है ना, सो h का वैल्यू आया 7√3 प्लस 7, दैट्स इक्वल टू 7 तो कॉमन निकाल सकता है, √3 प्लस 1 आएगा 7 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, दैट इज 7 इंटू 2.732, ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखिए 2732, without decimal you have to write the number into 7, 7 2s are 14, remainder 1, 7 3s are 21, plus 1 22, remainder 2, 7 7s are 49, 50 51, remainder 5, 7 2s are 14, 14 plus 5 is 19, right? फिर 3 स्थान पीछे आकर के पॉइंट, 1 2 3 स्थान पीछे आकर के पॉइंट, सो यू विल गेट इट एज 19.124 meter. This is the height of the tower. Okay, so again you can conclude here, therefore height of the tower is 19.12 meter. After point there is need of 2 decimals, decimal का बाद 2 ही नंबर्स ले लीजिए, तो इधर 2 नंबर्स लेते हुए ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा नंबर जो है 5 है, तो अगर इधर 5 आया तो 2 की जगह इधर 3 आएगा, एक और इधर बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि 5 और 5 से ज्यादा वाला नंबर 5 6 7 8 9, इन नंबर्स में कोई भी नंबर तीसरा नंबर का स्थान में आ गया तो इधर क्या करना है, एक इंक्रीज करना है, अगर 5 से कम आया तो बस उसको छोड़ दीजिए, छोड़ के उसका पहले जो नंबर है वो लिख लीजिएगा, दैट्स ऑल, क्लियर, लाइक दिस यू कैन ब्रिंग इट. The second question, here you can see a moving boat. Okay, it's something which is moving. A moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff. Cliff means it may be a mountain, okay, or it may be something tower like that. Just imagine that it's something. Whatever it is, we are going to draw only a straight line. So first of all, you will draw the ground. Ground पहले draw किया, फिर सीधा AB उसका cliff. AB 150 meter दिया, 150 meter ये रहा. AB is the cliff. So a moving boat is observed from the top of a cliff. So इधर से you are viewing a boat which is moving away from the cliff. This is the cliff. From here it is moving. Just imagine that this is water. Okay, ground level नहीं, बस ये water level है. Water है करके मान लीजिए. So this boat is moving away from the cliff, means उस तरह right side की ओर वो जा रहा है, ठीक है. So when this particular observer, इधर का वो आदमी जो है, when he is seeing this boat, he is seeing the angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Means he was seeing a moving boat. So पहले जब वो आदमी देखा तो वो सी पे था, बोट जो है सी पे था, 2 मिनट के बाद वो डी पे आ गया, यानी कि आगे बढ़ रहा है, 2 मिनट के बाद वो डी पे आ गया. तो पहले जब उन्होंने देखा है तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की ओर का एंगल जो है 60 डिग्री था, ये रहा, ये मीन दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, उधर से 60 डिग्री, ये 60 है, इसलिए इधर भी 60 आया, पहले मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में. तो 2 मिनट के बाद उसका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 60 से 45 हो गया, 60 था पहले, फिर वो 45 हो गया, यानी कि ये जो है 45 हो गया, इधर 45 होने की वजह से ये भी 45 होगा, ठीक है, 45 हो गया. नाउ 2 मिनट्स में हो गया था, यानी कि इधर से वो बोट इधर तक आने के लिए 2 मिनट का सफर किया है. इट ट्रैवल्ड 2 मिनट्स टू रीच फ्रॉम सी टू डी. So this was the initial position of the boat and D is the final position of the boat, and the observer is standing at A and AB is the cliff. BD, this is the total sea level or water level, whatever it is. Find the speed of the boat in meter per hour. Meter per hour. It's not meter per hour is given here, so you have to bring it in meter per hour only. Just forget not that thing, okay? Now whatever given here you have mentioned here, let us take, we are to find the speed of the boat. So let the speed of the boat be x meter per minute. We are taking it as x meter per minute. We are taking it in minutes because here it is given in minute. इधर मिनट में दिया है इसलिए मिनट में ही ले रहे हैं, आखिर में वो हावर में हम बदलेगा. We will change it to the hour itself, okay, towards the last. AB is the cliff such that AB is 150 meter. The initial position of the boat is at C and the final position is at D. Okay, clear with that one? You know distance is equal to speed into time.
डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. सो सी से डी तक का डिस्टेंस कितना होगा, उसका स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितना लिया था, एक्स लिया था. सो सी से डी तक आने के लिए कितना वक्त लिया था, 2 मिनट्स लिया था. सो स्पीड इंटू टाइम, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर एज 2x. क्लियर, 2 इंटू एक्स. सो इट इज 2 मिनट्स इंटू एक्स. ये सभी मिनट्स में है इसलिए सीधा 2 इंटू एक्स करके लिखा. अगर सेकंड में है तो सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो उसका जरूरत नहीं है. पूरा का पूरा मिनट में दिए तो मिनट में ही रहिएगा सब कुछ. ओके, सो वी टुक इट एज 2x. दिस वन वी डोंट नो, दैट्स व्हाई आई टुक इट एज y. Simply we are taking this as y. What we have to find? We have to find the speed of the boat. तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो इधर से वो बोट इधर तक आने के लिए कितना डिस्टेंस पार किया है, कितना वक्त पे. वक्त तो हमको पता है 2 मिनट्स लिया था. सो सी से डी तक का डिस्टेंस हमको निकालना है. दैट इज आवर क्वेश्चन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सी से डी तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, तो सीधा सी से डी तक ले रहे हैं तो ये वाला ट्राइंगल का अंदर आएगा सी डी, ए सी डी. देखिए, लेकिन ए सी डी इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल. आई टोल्ड यू whenever you are taking something it should be right angle triangle. लेकिन इधर ये right angle triangle बिल्कुल नहीं है. It's not a right angle. So you cannot take ACD triangle. Okay, so we are going to another way. First of all, we will find BD. We will find BD. This much. And from the BD we will minus BC. BD के अंदर से BC निकाल दिया तो बाकी कितना बचेगा, ये पूरा का अंदर से इतना निकाल तो बाकी क्या होगा, CD होगा. So this should be in your mind. This is the hint behind this one. When you're seeing this question, this should be in. पहले BD चाहिए, फिर उसके अंदर से BC निकालना है. BD जो आता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पड़ा है, और BC जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पड़ा है. अभी देखिए, सबसे पहले BC निकालेगा या BD निकालेगा, उधर ध्यान दीजिए. When you are choosing the right one, then only you can do it very simply. Now choose whether you want to find BD or you want to find BC first. इधर के हिसाब से पहले BD निकालना है, फिर BC, फिर दोनों को माइनस करना है, फिर निकलेगा CD का वैल्यू, है ना. लेकिन BD देखिए, BD कौन सा ट्राइंगल का अंदर पड़ा है, ये वाला ट्राइंगल का अंदर पड़ा है. इन दिस ट्राइंगल, what do you know about that triangle? Just imagine only that triangle. A B D 90 डिग्री. BD कितना है करके हमको नहीं पता है, लेकिन ये दिया है 150. इधर का एंगल पता है 45. काफी है ना. You can find this one. So this is the opposite side, this is the base. Opposite side, adjacent side, यानी कि perpendicular base. What is the relation? Tan. Let us go to that one. So keeping this in mind, in triangle ABD, tan, what is angle? 45 degree. 45 degree is equal to opposite side is AB divided by adjacent side is BD. That means from here only fix your eyes only on that small figure. नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा. इसका अंदर एक और ट्राइंगल आ रहा है तो वो ट्राइंगल का लेना, ये ट्राइंगल का लेना, वो कंफ्यूजन हो सकता है. सो लीव इट. tan 45 इज 1 इज इक्वल टू AB का दिया है 150 डिवाइडेड बाय BD. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो BD इज इक्वल टू 150 मीटर. सो यू गॉट BD. अभी तो BD मिल गया. अभी हमको क्या चाहिए, BC भी चाहिए, है ना. सो BC कौन सा ट्राइंगल का अंदर पड़ा है, ये वाला ट्राइंगल का अंदर पड़ा है. लेट अस गो टू दैट वन. लेट अस फाइंड BD. लेट अस टेक दैट ट्राइंगल BD. सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल का अंदर, सॉरी BC कौन सा ट्राइंगल का अंदर पड़ा है, BC इन ABC, इन ट्राइंगल ABC. दिस इज द वे हाउ टू चूज द ट्राइंगल. उधर भी ऑपोजिट साइड और बेस में है तो रिश्ता tan का ही होगा. tan, लेकिन इधर 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर तो AB है बाई बेस इज BC, है ना. यही है ना, छोटा वाला ट्राइंगल का बात कर रहा हूँ, दिस स्मॉल ट्राइंगल. सो व्हाट इज tan 60? इट इज √3. यू हैव टू बाय हार्ट दिस डिजिट्स. ओके, साइन, कोस एंड tan. साइन का, कोस का और tan का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू how to understand, how to make that particular thing. Okay, how to by heart that thing. I have given you tips like that only study. Okay, so √3 है. √3 is equal to, in most probably they will ask tan 30, tan 45, tan 60. So keep these things in your mind. Most of the question will be regarding tan only. Okay, very rarely we are using sin and cos. So make sure that you know all the values of tan very perfectly. Okay, so AB का तो वैल्यू दिया है 150 you are writing. BC तो नहीं पता है तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो
रूट 3 BC इज इक्वल टू 150, तो BC इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई रूट 3। हमको पता है, आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर, वेन एवर ए सर्ड यानी कि इरेशनल नंबर इज कमिंग ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट, वी कैनॉट कीप इट इन डिनोमिनेटर पार्ट, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द न्यूमरेटर पार्ट। तो इसको न्यूमरेटर में ले आने के लिए क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है ना। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, इधर का सर्ड, SURD, सर्ड, सर्ड का मतलब SURD, सर्ड मीन्स इरेशनल नंबर। इधर नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में जो आया हुआ सर्ड जो होता है यानी कि इरेशनल नंबर जो है, उसी इरेशनल नंबर से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 150 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, क्योंकि रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 तो 3 ही है। नाउ 3 एंड 150 गेट कैंसिल, 3 5 आर 15, तो 50। सो आखिर में आपको मिलेगा 50 रूट 3 मीटर। देखा है, ये दोनों बराबर ही है, 150 बाई रूट 3 का मतलब 50 रूट 3 ही है। So we made it like this. So you got BD, you got BC. So BD मिल गया, BC चाहिए, यही चाहिए था ना हमको. So we want CD. So let me do it here. Therefore, you never do it like this, okay? You go to the next page and do it on the bottom area only. I'm teaching in a video, that's why I'm writing like this. Don't make lines like this and write it on the right side. That's not fair. So हमको CD चाहिए. Therefore, CD is equal to, you can write it that one, BD minus BC. What is your BD? It is 150 minus, what is this one? It is 50 रूट 3, राइट। इधर तो क्वेश्चन का अंदर रूट 3 का वैल्यू खास करके नहीं दिया था, रूट 3 इज इक्वल टू 1.7, 1.73, 1.732, ऐसा कई क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो इफ इट इज गिवन, इफ द वैल्यू इज गिवन, देन यू हैव टू टेक दैट वैल्यू ओनली। बट इफ द वैल्यू इज नॉट गिवन, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। अगर कट होने वाला चीज है तो कट होने दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, स्टिल यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो फ्रॉम हियर okay, 150 minus 50 root 3, you got it. From here I think you can take 50 as common, right? 50 कॉमन निकाल सकता है, 50 कॉमन निकाल दिया तो 50 कितना बार आएगा इसके अंदर, 53 सर 150, 3 माइनस रूट 3, उतना क्या, ये CD क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज गिवन इन मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, उतना मीटर मिल गया। हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। So we write therefore speed is equal to CD by time, that is equal to 50 into 3 minus root 3 divided by, what is your time, it is 2 minutes. 2 and 50 will cancel, 25 will come, so 25 into 3 minus root 3, right? इतना क्या, मीटर पर मिनट, MIN करके मत लिखना, मिनट, ये तो पहले लिख लिया तो छोड़ दीजिए। मीटर पर मिनट, हमको क्या चाहिए, मीटर पर आवर में चाहिए। क्वेश्चन में वो था हमारा क्वेश्चन, मीटर पर आवर में चाहिए। तो इसको आवर में बदलने के लिए, इफ यू वांट टू चेंज दिस टू आवर, मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। सो ये मिनट इधर तो 1 है, सो इस तरह सोचिए, 25 इंटू 3 माइनस रूट 3 उतना मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट था, है ना, इसका मतलब वही है, डिवाइडेड बाई 1 मिनट है। तो ये 1 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 60 से डिवाइड करना है, सो डिवाइडेड बाई 60 आएगा। सो इसका नीचे यानी कि आई विल शो हियर, 25 इंटू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 60 आवर आएगा, है ना। 1 बाई 60 नीचे आएगा तो ये फ्रैक्शन नंबर है, सो पहले से ये फ्रैक्शन है, तो नीचे की ओर एक फ्रैक्शन नंबर से डिवीजन आएगा, तो उस वक्त कैसा करना है, न्यूमरेटर जो है वैसा रहने दीजिए, इनटू डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने का बगल उसका जगह क्या करना है, डिनोमिनेटर जो भी आया डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, 9th क्लास एंड 8th क्लास, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो 1 बाई 60 आया तो वो 60 ऊपर जाएगा, सो वी कैन राइट 25 इंटू 60 ऊपर आएगा, into 3 minus root 3, that much meter per hour. Let us multiply 25 into 6, 25 4s are 100, then 125, then 150,
25 6 150, फिर एक जीरो भी है, उतना 3 माइनस √3 मीटर पर आवर। बस इधर √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का जगह ने उसका जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, सो यू कैन कीप इट लाइक दैट। Hope you understood. So this is the way how to understand a question, drawing a figure, then coming back. Okay.